Welcome back. And in the Mega Times Now campaign that we've been running the last few days on the case that is underway of Bhawana Kishore, the Times Network reporter who was arrested by Punjab police on Friday. Now, the Punjab and Haryana High Court, remember, granted interim bail two times journalist Bhawana Kishore, and now the court has resumed hearing the case. So the hearing has once again begun. Arguments are being presented in the case as we speak. We'll go across to our legal reporters in just a bit. But remember how the High Court, most importantly, while granting interim bail to Bhawana Kishore after the Punjab police slapped charges of SC/ST Atrocities Act against Bhawana Kishore because of the caste of the woman injured in the accident, the court itself came down heavily on the FIR, the charges that were slapped against her, and said that prima facie no case of SC/ST Act can be made out as far as this case is concerned. And once again, in the case, arguments are shortly to begin. Court to hear Bhavana's regular bail plea. Nilashish is joining us with more details. Nilashish, what is the latest that you can bring to us from the hearing? Has it begun already? Well, yes, what we are picking up is that the hearing has in fact begun. Bhavana's lawyer has objected to the argument being presented by the Punjab government. The Punjab government clearly stating as of now that the maintainability of the petition is in question. So what the Punjab government is challenging as of now is the maintainability of the particular petition that has been filed. The bail application that has been put forward has been challenged on the grounds of maintainability. Of course, we're getting to know that the AG Punjab is in court as well, and the hearing has just commenced, wherein Bhavana's lawyer has also objected to the state's contention of maintainability. All right. Now, as far as this case is concerned, two important developments have taken place. One, of course, the illegal arrest, as Times Now has been putting out the details of the circumstances that were created leading up to her arrest. And Nilashish, thereafter came the relief in terms of the interim bail for Bhawana Kishore. And once again, the hearing has begun in the High Court, in the Punjab and Haryana High Court. You're telling us that the Punjab government has raised the issue of maintainability of the petition filed by us. But any word that we're learning on Bhavana's legal strategy going forward? Well, of course, the manner in which the act has been slapped, that has to be challenged. That is the main ground on which the manner in which the arrest was made. Given the fact and circumstances of the case, the arresting is under the scanner, and the manner in which SC/ST Atrocities Act was in fact slapped is something that has been challenged. Now, the judge, of course, as of now is discussing the particular arguments put forward by the Punjab government as well as Bhavana Kishore's lawyer. The question will be about whether or not the triple test for bail is satisfied in this case. Of course, she was granted interim bail, but two others, of course, from our network also are in fact in question here. The manner in which the court has slapped the SC/ST Atrocities Act is something that will have to be checked, that will have to be argued. But maintainability initially is the question that has to be decided as far as the Punjab government is concerned. Bhavana Kishore's lawyer says that we will come on Saturday again for an extension of interim bail, and that is what the court is being apprised of at this moment, given the fact that maintainability was challenged by the Punjab government. Okay. Earlier as well, Nilashish, Bhavana Kishore's lawyer had said that they approached the High Court for quashing the FIR against Bhavana and also granting bail to the Times Now correspondent and the other two. The video journalist, Times Now's video journalist, and the driver also spoke of how they received a copy of the FIR after the custody order was given in the afternoon. But questions have also been asked, and we continue to ask those questions on why कैसे हो सकता है एक आम आदमी के नेता जो हैं, एक आम आदमी की राजनीति का दावा करने वाले जो नेता हैं, वो मुख्यमंत्री बनते हैं, वो कैसे घर में 45 करोड़ का
किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमने ऑपरेशन शीश महल में इन तमाम सवालों को उठाया और इसीलिए शायद टारगेट किया गया है। तो इस वक्त की दो बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं। जो वकील की ओर से यह बात कही गई है कि या तो एफआईआर को क्वैश कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, या फिर एफआईआर रद्द होने तक कंप्लीट रेगुलर बेल दे दी जाए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कोर्ट नंबर 50 पंजाब हरियाणा कोर्ट से जस्टिस दीपक सिब्बल की बेंच में इस वक्त की बड़ी खबर। We'll keep going across to our reporters. Of course, it's the largest team of Times now that continues to ask all of those questions from Punjab Police, the Aam Aadmi Party Sarkar in Punjab, especially given that this was an invitation that was sent out by the Aam Aadmi Party. They invited Times Now's team to this public event, and look at what transpired thereafter. Look at the kind of charges that have been framed against Bhawana Kishore. Shivani is also getting us more details. टारगेट किया जा रहा है भावना को, और यही बात भावना के जो लॉयर हैं वो इस वक्त डिस्कशन के दौरान, सुनवाई के दौरान कर रहे हैं। हमारी दो पिटिशंस हैं। पहली की क्वॉश कर दी जाए ये जो एफआईआर है जो गलत ढंग से लिखी गई है, और दूसरी एफआईआर क्वॉश होने तक जमानत यानी रेगुलर बेल जिसकी मांग की जा रही है। ये दोनों ही बातों पर लगातार सुनवाई जारी है। जस्टिस दीपक सिब्बल इस पर सुनवाई कर रहे हैं। दोनों तरफ से अपने पक्ष रखे जा रहे हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब सरकार की तरफ से आए हैं, और दूसरी तरफ हम लगातार जो वकील हैं वो यहाँ पर तथ्य रख रहे हैं सामने कि किस तरह से यूपी से एक कवर करने के लिए, खबर को कवर करने के लिए आई भावना, और भावना को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भावना एक पॉलिटिकल नेता के खिलाफ एक खबर चला रही थी और इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। तो सीधे सीधे जो तथ्य हैं जो पूरी जनता के सामने भी हैं कि ऑपरेशन शीश महल चलाए जाने के बाद किस तरह से टाइम्स नाउ नवभारत और उसकी टीम, उसके क्रू मेंबर्स को यहाँ पर टारगेट किया गया, ये बात भी यहाँ पर कोर्ट के सामने रखी जा रही है। तो उम्मीद की जा रही है कि संज्ञान में लिया जाएगा इन सभी बातों को, और जिस तरह से एक साजिश के तहत फंसाया गया इस टीम को, इसे जल्द भी बेल मिल सकेगी। All right, so now as the hearing is going on, we are getting updates on what's happening. Remember, Times Now stand had also been vindicated in the initial observations. किया गया वो यूपी से पूरे फंक्शन को, जहां पर दो मुख्यमंत्री मौजूद हैं, उनके फंक्शन को कवर करने आई थी। ये भी कहा गया है कि ड्राइवर और कैमरामैन के खिलाफ SC/ST एक्ट नहीं है, SC/ST एक्ट नहीं है। फिर क्यों उन्हें इस तरीके से पकड़कर तुरंत जेल भेज दिया गया? ये भी एक बड़ी बात जिसकी हम चर्चा कल कर रहे थे। यानी बहुत तेजी से इस पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट नंबर 50 में जस्टिस दीपक सिब्बल के सामने। अब तक मैं समराइज कर देता हूं विद्या, क्या हुआ है। सुनवाई शुरू हुई है अब से थोड़ी देर पहले, और उसके बाद एडवोकेट जनरल पहुंचे पंजाब सरकार की ओर से इस पूरे मामले को देखने के लिए। दो बातें हमारे वकील की ओर से कही गई हैं। पहली बात कही गई है कि या तो इस एफआईआर को क्वैश कर दिया जाए, कई सारी बातें, तर्क उसके पक्ष में दिए गए हैं। यह भी कहा गया है कि एफआईआर रद्द होने तक जमानत दे दी जाए, अगर अभी एफआईआर रद्द नहीं होती है तो। यह भी कहा गया है कि पुलिस ने रिमांड सीधे भावना की नहीं ली, सीधे जेल भेज दिया गया। So the advocate now arguing in the court for the FIR against Bhavna to be quashed, and of course the two other members of the Times network as well. Senior news editor Bhavtosh also joining us on the broadcast. Bhavtosh, there have been several violations, many of them also caught on camera as we've been reporting from day one. The interim observations that had come in from the court also spoke about how the SC/ST Act prima facie does not look to be fit in this case. Yes, Pratibha, right from day one, this case appears to be a fake case. The very fact that the SC/ST Act was not slapped on the driver as well as on the VJ, but on Bhavna, and also this was done primarily to make sure that she does not get bail, and that was the reason why this section was invoked. Remember, this case, most of the sections of the IPC that was invoked in the FIR were bailable, but sections of SC/ST Act was slapped, and this is what is being presented before the court by Times Now's lawyers, that the FIR itself looks to be a Malified one, and the entire case appears to be a fake one. And this has also been highlighted by Times Now in its report that when Bhavna was present
at that particular spot in Ludhiana, there was an attempt by unidentified people, including the complainant in this case, to trap her. And this was done in a very planned manner. She was prevented from leaving the spot. And once she was prevented from leaving the spot, there was an attempt to entrap her, and there was a fight that was orchestrated. Coming back to the hearing that is taking place, what is happening inside the High Court is that the lawyers are telling us that there was no reason to add the sections of SC/ST Act. Remember, when she was given interim bail, even the High Court had pointed out that since the victim in this case, Bhavana, did not know the complainant in this case, why sections of SC/ST Act was invoked. And that's what Times Now, even in the statement, had highlighted, that there was no reason for the complainant to say this, that she in fact became victim of a casteist. Bhavana came to Ludhiana to attend an event where there was an invite given by the state administration, and she was attending that event. And later on, she was prevented from attending that event. And then this entire incident that happened was done in a very calculated and planned manner. And this point is being presented before the High Court. Even earlier last week this was done. And that's the reason why she managed to get the interim bail. Back to you. Okay, all right. So, in fact, in the observations that had been made as well, like you mentioned, the SC/ST Atrocities Act had been put in very arbitrarily. The court, of course, saying that prima facie does not look to be a case of SC/ST Atrocities Act to be slapped against Bhavana. But interestingly, as Rakesh was also pointing out, the SC/ST Act has not been put in place against the video journalist Mritunjay or the driver Parminder, and yet they remain in custody. कोर्ट का मानना है फिलहाल, क्योंकि सुनवाई चल रही है और हमारा जो पूरा टीम यहाँ पर तैनात है, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, गौरव हैं, गुरप्रीत हैं, वो कोर्ट रूम के अंदर मौजूद है, वहाँ से एक अपडेट हमको दे रहे हैं। और ये जो अपडेट आया है कि दोनों ही पक्षों से, दोनों ही तरफ से अपनी अपनी बातें रखी जा रही हैं। भावना के जो वकील है वो कह रहे हैं कि मैं यूपी से आई थी और मैं यहाँ पर एक इवेंट को कवर करने आई थी, मैं उन महिलाओं को जानती नहीं थी, SC/ST एक्ट की कोई वजह नहीं है। और दूसरी बात ये कि SC एक्ट कैमरामैन और ड्राइवर के खिलाफ नहीं लगाया, तो उनकी जो गिरफ्तारी है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। क्वॉशिंग ऑफ द FIR को कोर्ट मान रहा है कि थोड़ा जल्दबाजी है, इस पर जांच हो रही है। और अब दूसरी तरफ से जो भावना के वकील हैं वो भी अपना पक्ष रखेंगे इस पूरे मामले पर। तो लगातार डिस्कशन जारी है, पूरे तथ्यों को यहाँ पर कोर्ट सुन रहा है और लगातार जो शुरुआत से हम कह रहे थे कि एक गलत ढंग से जी। Okay, all right. So the hearing is going on, and advocate has informed the court. ये भी कहा गया कि अभी आप आए हैं सामने, अभी इस पूरे मामले की जांच भी है, ऐसे में क्वैश की मांग तुरंत करना कहां तक ठीक है। उसके बाद वकीलों की ओर से भी बात रखी जा रही है कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद। और ये शुरुआत में ही बात कह दी गई थी कि या तो इस FIR को क्वैश कर दिया जाए, या तो फिर जब तक FIR क्वैश नहीं होती है तब तक जो है हमें रेगुलर बेल दे दी जाए। यह भी वकील की ओर से कहा गया है। जब कोर्ट की ओर से यह टिप्पणी आई कि अभी जांच हो रही है, ऐसे में क्वैशिंग की मांग जल्दबाजी है, तो यह भी कहा गया है वकील की ओर से कि हम FIR का कंटेंट जो है वो कोर्ट को बताना चाहते हैं, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे। क्या उस कंप्लेन में कहा गया था, यानी सारी वो बातें, किस तरीके से दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई भावना के खिलाफ, कैमरामैन के खिलाफ, मृत्युंजय के खिलाफ, FIR में क्या कुछ कंटेंट है, ये अब कहा गया है। जब कोर्ट की ये टिप्पणी आई कि अभी जांच हो रही है, ऐसे में क्वैशिंग की मांग क्या जल्दबाजी नहीं है, तो वकील की ओर से ये कहा गया कि हम FIR का जो कंटेंट है वो कोर्ट के सामने रखते हैं और उसके आधार पर हम कहना ये चाहते हैं कि वो क्यों क्वैश की मांग कर रहे हैं। ये बात कही गई इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट। विद्या, ऑल राइट।